Okay, so hi everyone. Uh, this is Samprit Roy, and in this video, I am going to make you all go through a recent financial model that I made for my practice purpose. The name of the company is Eicher Motors. It is a very famous automotive company, and I have done a lot of things in that model. So first, let me share my screen. Okay, cool. Now, let's quickly go through the model. So as you can see in the Excel sheet before you, uh, here is the historical financial statement uh, tab of the model. So before I start explaining how I did this and what I did, let me give a quick introduction of myself. My name is Samprit Roy. I have been born and brought up in Kolkata, West Bengal. I did my schooling from Kendriya Vidyalaya, Barrackpur, and then I had an inclination towards the business side of things. That is why I took commerce in class 11th and followed myself into BCom in order to gain some theoretical knowledge about business. After 3 years of my BCom, I realized that since BCom was entirely, theoretical and I could not learn any real life concepts during that course, so I decided to do an MBA and I started preparing for CAT, but it took me 3 years to 2 years to convert a decent enough MBA college. So uh, that is why I have a 2 years gap in my resume. Now here I am sitting in Great Lakes, Chennai, making a financial model video for you all. So yeah, that's pretty much about my professional frontier. From personal end, I am a guitar player. If you are following my YouTube channel, you must be knowing that I regularly post guitar videos on YouTube. So that's kind of a hobby that I picked up during in my MBA college only. Now, why I am making this video? I am making this video primarily for two reasons. First is for my own revision purpose because my videos hardly get 20 30 views. But I feel that if I need to refer back when I'm making a new model, I will refer back to this video in case I am stuck in any process. And the second reason being, I want to practice my English speaking skills. I want to improve my communication skills. That is why I am making this video. This is the reason. So, without any further ado, let's get started. So, in this sheet, I just basically plotted the historical financial statements from the company's annual reports. Okay, here is a type error. Okay, so uh, those of you who don't know how to download the financial statements of a company, you go to the browser. For example, if it is Eicher Motors, you type this website called Screener. Then in this search bar, you type your company name. If it is a listed company, then it will appear here. Then you go to the bottom, and in this annual report section, you download whatever whatever year file you need. I have my annual reports downloaded, so I won't download it again. Here in this section, I have downloaded all the uh,
financial reports from 2019 to 2024. So if I open one of these and well, it's taking some time. Okay. So once you download it and double click it, it will open in page one. Now, what we need for our purpose are three financial statements: P&L, uh, balance sheet, and cash flow statements. And we need for the consolidated ones. Now, what is the difference between consolidated and standalone? In standalone, you get the financial statements and figures of only the entity. For example, if I'm doing, let's say, valuation, or I want to analyze the P&L of Royal Enfield, which is a part of Eicher Motors, then in the standalone part, I will get the financial statements of only Royal Enfield. But in case I'm doing, I need to see all the subsidiaries, joint ventures, and other related parties of, let's say, Eicher Motors. Then I will view the standalone. Now, I am doing a valuation for the entire, you know, for the entire Eicher Motors. So I am using standalone statement. Let's type profit and loss here and then wait for some time. Automatically, it will lead you to the first profit and loss that is written. But this is not something I want. This is director's report. So I press enter. It takes me to the second link of profit and loss. This is the second time profit and loss is written in this entire statement, right? In this entire document of 483 words, this is the second time profit and loss is written. I tap enter again. Now here I am. This is exactly the thing I need. Standalone statement of profit and loss. Now this structure I need to, uh, you know, incorporate into my Excel file. So what I did was I manually entered each of these figures to avoid any errors. Okay. There are various techniques available, such as in I love PDF, you can just save this particular page from this entire PDF and uh, save this page and upload it on I love PDF to get an Excel version of this. But there are many problems associated with this process, like it will not correctly identify which column have which figures. So I prefer manually typing. Now coming back to a financial model, as you can see, we have all the three major financial statements hard coded here for I think 5 months. I have done this. Sorry, 5 years. 1, 2, 3, 4, 5, 6 for 6 years. uh, there is nothing different here than what was there in the financial statements, so I won't spend much time here. Okay, let's go to the next uh, sheet. Reformulated P&L. Now, before I start explaining this sheet, what is valuation? Let me explain this. While doing this equity valuation of a company, we try to arrive at an equity value. You know, we try to arrive at an equity value by considering lot of figures here and there.
And then we compare that equity value with the market capitalization to check whether the company is overvalued or undervalued, right? So this is reformulated P&L. In this reformulated P&L, what I have done is I have restructured the original P&L. In the original P&L, if you see, you will not find uh, heads like gross profit or EBITDA or EBIT. And these are some of the figures that I need for my analysis. That's why I have restructured the P&L into my desired format. Uh, how you can do this? Okay, so these are some of the major heads like total income. Well, sales will be the most, sales will have the maximum revenue. Then we have other income. Uh, okay, other income will constitute of many things like whatever you can imagine, like in maybe interest income or rent received. Okay, so these are the kind of income that will be there in the other income section, and sales will have the entirely, you know, revenue from sales revenue that the company and its different subsidiaries has generated. Then other income as percentage of sales, it is optional to put. You can or cannot put according to your wish. Then we have COGS. Uh, the best way to do it will be to put all the figures, P&L figures, copy this, paste it to ChatGPT, and then ask it to classify the figures into total income, gross profit, EBITDA, EBIT, uh, EBT, and EAT. All right. And once you are done with the classification, kindly check if this figure is matching with no, this figure. Net profit after tax in the original P&L is matching with your earning after tax figure. Now, once we are done with the reformulated P&L, we will jump to the next section, which is ratio analysis. There are a couple of heads of ratios that I have made here. Let me zoom it a little bit. Now, what is the purpose of ratio analysis? We do ratio analysis to compare different companies in the same industry as well as compare the performance of the same company over a period of time, isn't it? So it is kind of a both a horizontal as well as no, it's a it can be used for horizontal analysis as well as for comparable company analysis. Okay, so here are some of the growth ratios. We have sales growth, which is sales for this year minus sales of last year by sales of last year. Similarly, we have EBITDA growth, EBIT growth, and net profit growth. So I basically plotted it in this format. Then we have liquidity ratios.
Okay, so I had to change the my sitting place. I am sitting in my college library and recording this. So yeah, so we were in ratio analysis, right? We discussed why do we do ratio analysis? We do that in order to compare the different years of performance for the company as well as compare different companies across industries, right? So in this head, first we calculated some growth ratios, which is uh, current year minus last year by last year into 100, right? Similarly, we do the same for EBITDA, EBT, and net profit. Uh, then we went on to calculate liquidity ratios. Now, what are liquidity ratios? These ratios determine the liquidity position of a company. What is liquidity? Liquidity is basically those assets which can be converted to cash easily, right? So current ratio is the first liquidity ratio and the very famous liquidity ratio calculated by the formula current asset by current liability. Quick ratio where we subtract inventory from the current asset and then divide it by current liability, and then we have cash ratio which is cash and cash equivalent by current liability. Okay. Now, why do we subtract inventory from quick ratio? And how is quick ratio different from current ratio? In quick ratio, we do not take into account the inventory effect, right? So in quick ratio, we do not take into account the inventory effect. What is inventory effect? Inventory is a perishable asset. In many cases, it might be the case that a company had a lot of inventory, which was increasing its, current asset valuation, but suddenly inventories went obsolete. Let's say it was a mobile company. Okay. Okay. So we are doing for Eicher Motors. So let's stick to that only. Now, let's say Eicher Motors had 150 units of Royal Enfield Classic 350 in their inventory. Now, it was seen that after the advent of, let's say, a competitor, let's say Honda CB350, uh, Royal Enfield Classic became, irrelevant. Okay, because uh, Honda C50 is such a bike that it gives the positives of Classic 350 as well as its high-end models like Hunter or let's say what is that? There is a 650cc bike from Royal Enfield. So it is Honda CB350 is combining the positives of both this Classic 350 and a 650cc bike of Royal Enfield and giving it at much a lower price. So classic people are not buying Classic 350. Okay, so the company, let's say, have to make some improvements in the present Classic 350 in order to effectively sell them. Now, the inventory that we have of 150 units of Classic 350 is no longer relevant because they will not be sold. Okay, so inventories have this nature that they are exposed to such kind of risks. That is why, while doing quick ratio calculation, while doing liquidity analysis, analysts generally uh, preferred not taking inventory. Next, we have profitability. Now, what is profitability? Profitability refers to those ratios like uh, m- mostly margin ratios. Net profit is a percentage of like how much percentage of sales is a particular line item. Let's say gross margin, which is gross profit by sales, right? Out of sales, how much
margin I am getting out of sales after deducting all the expenses before this particular line item. In this case, it is gross profit. Then we have operating margin, which is mm, EBIT. Okay. So similarly, we have EBITDA, we have EBT, net profit. These are margin ratios, right? And all these are measured as a percentage of sales. Like sales का कितना परसेंट हमने बचाया, right? सारे expenses meet करने के बाद. Then we have return on asset, which is profit after tax or net profit by total asset. This particular ratio measures how effectively the company is using its assets to generate profit. This could be one definition. Another definition could be for per unit of asset, how much profit is the company generating, right? Similarly, return on equity for uh, one unit of equity, how much profit is the company generating, right? Net profit by total equity. Then we have productivity, where we have ratios like inventory turnover, the formula for which is COGS by average inventory, cost of goods sold by average inventory. What does this ratio tell us? How many times an average stock of inventory is being sold throughout the year, right? Similarly, we have asset turnover ratio, sales by total asset. Sales is how much percent of total asset. That as simple as that. Or how efficiently we are doing, generating revenue from sales by using our assets. Then we have receivable turnover ratio, which is sales by receivable. Then we have leverage ratios, in under which first we have debt to equity ratio, and the formula for which is total liabilities by total equity. We have debt ratio, which is total liability by total asset. We have interest coverage ratio, which is EBIT by interest expense. We have equity multiplier, which is total asset by shareholders' equity. Then I have also done a two-point analysis, which divides the ROE into three major components: profitability, productivity, and leverage. The formula for profitability is net profit by revenue. Then productivity, we have revenue by total asset, and leverage, we have total asset by shareholders' equity. The thing about two-point analysis is that if you multiply these three ratios, then revenue will get cancelled, total asset will get cancelled, and we will be left with the classic formula for return on equity, which is net profit by shareholders' equity. So we have done the two-point analysis here. As you can see, the profitability component is quite low and the leverage component is quite high, and productivity is medium, right? The profitability is component is low, which suggests that sales का बहुत कम हिस्सा net profit में जा रहा है. Very less quantity of revenue is going as net profit, और बीच में कहीं पे वो खर्च हो जा रहा है ना? It is being spent somewhere in the middle, all the revenues, you know. Leverage component is high, which tells us that a large portion of the company's capital is coming from debt. The business is being driven by debt mostly. All the Most of the times it is more than 100%. Okay.
टोटल एसेट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, दैट मीन्स कंपनी के पास लेट्स से 10 यूनिट ऑफ एसेट है, राइट? सॉरी, लेट्स से कंपनी के पास 10 यूनिट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स है. इट मीन्स now if total asset by shareholders equity exceeds 100%, it means that 10 यूनिट का इक्विटी शेयर खर्च करने के बाद भी हमें, लेट्स से यहाँ पे 128% है, तो 2.28% हमें लगा बाहर से, विच हैज कम फ्रॉम डेब्ट, हमारे टोटल एसेट को फंड करने के लिए, राइट? तो दिस इज अ क्लासिक डेफिनेशन ऑफ लेवरेज. Now, if we were to do some analysis here and there, growth ratios में we have average growth ratio of 12%, 13%, sorry 12%, and median growth rate of 14.5%. तो हमारा सेल्स हर साल ईयर ऑन ईयर ऑन एन एवरेज 12% से ग्रोथ हो रहा है ना? किसी साल से 2023 से 2024 में, ओके, सो 2021 2020 19 2021 इज 22, तो 22 से 23 में हमारा 40% से सेल्स ग्रोथ हो गया. ऐसा कैसे है? हियर वी कैन ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ कोविड, राइट? क्योंकि कोविड की वजह से सी 20 में सेल्स रुक गया था, 21 में भी सेल्स रुक गया था, और 22 में मार्जिनल ग्रोथ हुआ है ना, माइनस थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, बट 22 से 23 में मैनेजर्स ने बहुत प्रेशर दिया कि कैसे भी करके अब पुराने फॉर्म में वापस आना है ना. और कोविड खत्म होने के बाद लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया, परचेजिंग बिहेवियर. The people started spending more on luxuries like automobiles. So this figure is a direct testament of people's the direct reflection of people's spending behavior, as well as the pressure from the company's sales performance in general. So this is how we can measure the sales component. तो सेल्स जैसे बड़ा, सेल्स के साथ ऑब्वियसली EBITDA भी बढ़ा, है ना? EBIT भी बढ़ा, नेट प्रॉफिट ग्रोथ, बाप रे, नेट प्रॉफिट ग्रोथ क्या बढ़ा. तो सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन sales from 18% to 40%, net profit grew from 24% to 73%. अब इससे क्या पता चलता है? इससे क्या पता चलता है कि there was a lot of cost cutting, right? Lot of cost cutting. This is strategic, financial success, I would say. काफी स्ट्रैटेजी वगैरह बना के ये अचीव किया लोगों ने, ये ईचर मोटर वालों ने. Then we have liquidity. Now, let's see, 2019 में current asset was 2 times the current liabilities. 20 में 3 times, 3.35 times. 21 से 22 में करंट रेशियो इतना कम कैसे हो गया, है ना? This dip, can we explain it by common sense? Again, we have to see the COVID effect, है ना? 19, 20, 21 में COVID was on full swing, but जैसे 22 में demand started rising, liquidity went down. How liquidity went down? Because the company decided maybe to invest some of its underlying cash in any productive investment field. हो सकता है ना, क्योंकि कोविड के टाइम्स में वो लोग होल्ड करके रखे थे पैसा कि कोई भी कभी भी इमरजेंसी आ जाए तो हमें कैश से ही पे करना पड़ेगा.
But as soon as that risk went out, the company decided to, you know, invest its cash, it or invest its liquid assets in a meaningful place, in any positive NPV projects, or in any merger and acquisitions. Similarly, 23 में और कम हो गया लिक्विडिटी, और 23 से 24 में ऑलमोस्ट सेम है। तो एक क्विक करंट रेशियो का एक मतलब एटलीस्ट 100% मेंटेन करके रखना, इट्स अ स्टैंडर्ड, क्योंकि करंट रेशियो ज्यादा गिर गया तब ये एक नेगेटिव सिग्नल है जो शेयर होल्डर्स को पहुंचता है। सिमिलरली 19 से 20 में इन्वेंटरी काफी बढ़िया, देखो क्यों बढ़िया, क्योंकि सेल्स नहीं हुआ तो इन्वेंटरी रह गया। तो चेंज इन क्विक रेशियो से हमें डायरेक्टली इन्वेंटरी का एक इम्पैक्ट पता चलता है ना। अब 20 से 21 में देखो, थ्री आई मीन 3 टाइम्स इट इज मोस्ट राइट। तो इससे हमें पता चलता है कि 19, 20 और 21 में नहीं हुआ सेल्स नहीं हुआ, माइनस, देखो माइनस में सेल्स फिगर है, और हमारा क्विक रेशियो काफी ज्यादा है, तो मतलब इन्वेंटरी में काफी माल हमारा पड़ा हुआ था, जो कि 21 से 22 में बिक गया, 22 से 23 में और बिक गया, है ना। दैट एक्सप्लेन्स द जंप इन दिस सेल्स ग्रोथ। कैश रेशियो में, कैश इट बेसिकली मेजर्स कैश एज अ परसेंटेज ऑफ आवर करंट लायबिलिटी। तो कैश हमारे पास 19 में था, लेट्स से 34% ऑफ करंट लायबिलिटीज, 20 में 2.13%, 21 में 3.58%। ओके, ओके, ठीक है। तो ये उतना एक यूजफुल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि करंट लायबिलिटीज भी चेंज होता रहता है ना। अगर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज ए परसेंटेज ऑफ करंट एसेट होता, तब हमें पता चलता कि मतलब काफी इंसाइट्स हम ले सकते थे, बट ये रेशियो का उतना मेरे को अंदाजा नहीं है। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, राइट, आई एम ऑल्सो लर्निंग एवरी डे। सो अभी फिलहाल मेरे को उतना नॉलेज नहीं है कैश रेशियो का। लेट्स चेक प्रॉफिटेबिलिटी। व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? अगर हम रिफॉर्मुलेटेड में आए तो हमें पता चलेगा कि टोटल इनकम माइनस कॉग्स अपना होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट वाज ऑलमोस्ट द सेम थ्रू आउट ऑल दिस इयर्स। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोविड की का इम्पैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट में तो नहीं आया, है ना। सेल्स कम गया, बट उसके सिनोनिमसली कॉग्स भी कम हो गया टू मेंटेन द ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये हो सकता है कि स्ट्रेटेजिकली करा गया हो, या फिर ये नेचुरली भी हो सकता है, इट कुड बी नेचुरल, है ना। नाउ लेट्स लुक एट ऑपरेटिंग मार्जिन। व्हाट इज ऑपरेटिंग मार्जिन? ऑपरेटिंग मार्जिन इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है ना। Now, what are operating expenses? Operating expenses are basically all the expenses that are required to run the business apart from COGS. ओके, क्योंकि COGS हम पहले ही ले चुके हैं COGS का इफेक्ट। अब ऑपरेटिंग मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए लेट्स से 19 में था 31%, 25%, 24, 29। तो या ऑपरेटिंग मार्जिन इज ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, बट आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर हाउ टू एक्सप्लेन दैट। Coming to EBITDA margin, what is EBITDA? EBITDA is earning before tax, depreciation and amortization. मतलब
कंपनी के सारे एक्सपेंसेस जो बिजनेस रनिंग रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, लोगों को सैलरी देना है, इलेक्ट्रिसिटी पे करना है, रेंट पे करना है, ये सब खर्च जो यू नो मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस को रन करने के लिए जो एक्सपेंसेस है, वो सारे एक्सपेंसेस हम देने के बाद जो पोर्शन बचता है उसको हम लोग कहते हैं ईबिटा। अब ईबिटा से हमें सिर्फ तीन चीजें डिडक्ट करने से नेट प्रॉफिट निकलती है। पहला है टैक्स, दूसरा है डिप्रिसिएशन, तीसरा इंटरेस्ट। अब ईबिटा एक बहुत वैल्यूएबल कंपोनेंट है, एक बहुत ही यूजफुल कंपोनेंट है कंपनीज को एनालाइज करने के लिए अक्रॉस इंडस्ट्री, क्योंकि टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कंपनीज का अलग अलग हो सकता है, बट EBITDA is kind of identical, especially EBITDA as a percentage of sales. Okay, हमें ये बताता है कि कितने एफिशिएंटली कंपनी यू नो अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर रही है सेल्स के मुकाबले, एक प्रॉफिट तक आने के लिए, है ना, EBITDA तक आने के लिए। अब उसके बाद कुछ कंपनीज का लाइक टैक्स स्ट्रक्चर अलग होता है, कुछ कुछ कंपनीज स्पेशल टैक्स रेजिम्स के अंडर आते हैं, तो उनके लिए उनका टैक्स सिस्टम जो है वो थोड़ा बदल जाता है। कुछ कंपनीज डेब्ट टैक्स शील्ड का भी इस्तेमाल करते हैं अपना पैसा बचाने के लिए, जिससे उनका नेट प्रॉफिट थोड़ा हिल जाता है ना। और थोड़ा स्क्यूड हो जाता है EBITDA के मुकाबले। ओके, देन वी हैव EBT मार्जिन, राइट। EBITDA से आप डेप्रिसिएशन हटा दोगे तो EBIT, सॉरी, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट हटा दोगे तो EBIT बन जाएगा। तो या EBIT मार्जिन इज ऑल्सो ऑलमोस्ट similar to EBITDA, which tells us that taxes and depreciation, sorry, interest and depreciation are also synonymous. Then we have net profit margin, जो कि शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना। अब ये वाले फिगर को देखो, नेट प्रॉफिट मार्जिन, उसके साथ नेट प्रॉफिट ग्रोथ को देखो, है ना। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखोगे तो हमें पता चलेगा कि नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स वाज ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट, है ना। ये नेगेटिव में नहीं, लेकिन नेट प्रॉफिट का ग्रोथ नेगेटिव में गया। क्यों? क्योंकि सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में गया, है ना। तो इस मामले में कंपनी सक्सेसफुल रही है कि अगर हमारा सेल्स कम हो रहा है तो हमें अपने खर्च भी कम घटाने होंगे इन ऑर्डर टू अराइव एट द सेम, एटलीस्ट द सेम, टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में भी उतार चढ़ाव आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया। 19 से 20 में प्रॉफिट थोड़ा सा गिर गया, 22 से 19 हो गया। मे भी इसमें इतने अच्छे से कंपनी अपने एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पाई। सिमिलरली 19 से 15 हो गया। तो इससे ये भी, दिस इज ऑल्सो टेस्टामेंट ऑफ द फैक्ट कि थोड़ा सा इधर उधर हो गया इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द एक्सपेंसेस। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन एनालाइज द नेट प्रॉफिट मार्जिन। रिटर्न ऑन एसेट, खैर इसमें उतना कुछ है नहीं एनालाइज करने के लिए। रिटर्न ऑन एसेट, कंपनी इतना इतना परसेंट रिटर्न जनरेट कर रही है अपने एसेट्स के कंपैरिजन में। मतलब या देयर आर insights that we can generate from this column, but I am not going into that much detail, क्योंकि इसके लिए हमें बैलेंस शीट के एसेट को भी एनालाइज करना पड़ेगा कि एसेट कितना घटा या फिर बढ़ा, और उसके मुकाबले नेट प्रॉफिट का क्या कोरिलेशंस रहा है। तो दिस वी कैन derive from this line item।
Then we have return on equity. uh, Now as you can see, रिटर्न ऑन इक्विटी गिर गया यहाँ से यहाँ तक, है ना। 19 से 20 में रिटर्न ऑन इक्विटी काफी गिर गया। नेट प्रॉफिट जितना गिरा है उससे कम गिरा या फिर ज्यादा गिरा, ये एक वैलिड क्वेश्चन है। अगर नेट प्रॉफिट से रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा गिरता है ना, तो ये बताता है कि कंपनी प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वो पैसा नहीं जा रहा है ना। तो क्या हो रहा है फिर, मे बी कंपनी री इन्वेस्ट कर रही है, मे बी कंपनी कैपेक्स में इन्वेस्ट कर रही है। सो दिस इज हाउ वी कैन एनालाइज। नाउ लेट्स गो टू प्रोडक्टिविटी। In the productivity ratio, first we have inventory turnover ratio, we have COGS by average inventory. It tells us how many times on an average inventory has been used, right? So let's say in 2019 we have 7.98 figure. So it tells us that almost 8 times the inventory has been filled and it has been sold. Similarly, in 2020, the figure comes to 8%, 8 times. Then in 2021, it becomes 5 times. So it tells us that the sales, it explains the decrease in sales, right? कि हमारा इन्वेंटरी कम, inventory has been, spent less number of times, and hence there is a reduction in sales. And from 2021 to 2024, it has been increasing, which is a good symbol that sales are going back to normal. Then we have asset turnover ratio, which is sales by total asset. Uh, it tells us how productively we are using our total assets to generate sales, right? So it is 0.86, 0.74, 0.6. Okay, it has been almost consistent over the years. Then we have receivables turnover ratio. What is receivables turnover ratio? I'm not sure. Let's check on ChatGPT. Okay, so inventory turnover ratio tells us that how efficiently the company is collecting its receivables, right? How efficiently a company collects its account receivable, or how often it converts receivables into cash over a given period. Now let's say into 2019, जब धंधा एकदम पीक पे चल रहा था, बोल सकते हैं, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी गॉज्ड इट्स द कंपनी गॉज्ड द कमिंग अपकमिंग डेंजर ऑफ कोविड, एंड जितना भी उसका पेबल था, राइट, जितने भी उसके क्रेडिटर्स थे उनसे वो जल्दी जल्दी पैसे लेने में लग गया।
So that could explain this 116 times receivables turnover ratio. But over and all, this explains that how many times in a year the company has collected its receivables and converted it into cash, right? So yeah, these are the figures. Then we have leverage. Leverage, as I told you, mm, it measures the impact of debt on the overall capital. So debt to equity ratio is almost consistent over the years, which is a good sign. Debt ratio is total liability by total asset, which is also very stable. EBIT by interest expense is has been drastically reduced from this to this. Now, is it a good sign or a bad sign? Sorry. Uh, yeah, interest coverage ratio. It tells us how many times the company is able to cover its interest expenses using its earnings or EBIT in our case, right? So it's a good sign. No, I mean, if it is dropping, then it's a bad sign. कि हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ गया बट EBIT उसके मुकाबले नहीं बढ़ा, या फिर हमारा EBIT कम हो गया बट इंटरेस्ट एक्सपेंस सेम रहा, है ना? This is something similar narrative we can generate for this. But बाकी 2020 से 24 तक it has been consistent. So yeah, when we have equity multiplier, total asset by shareholders equity, it is almost consistent over the years. Asset as a percentage of equity. And we have DuPont analysis, which I've already explained, right? कि कंपनी काफी ज्यादा leverage और debt driven है, and debt is increasing the ROE. Now we will come to forecasting. So in the forecasting page, I have done forecasting for sales for like how many years? For 5 years. Forecasting I have done for sales using three methods. Sorry, four methods actually. First is linear regression. Second is 3-year moving average. Third is ADIMA or autoregressive integrated moving average or ADIMAX. I think uh, this ADIMAX thing takes it into account the different factors that could be responsible for the sales growth. So for the first three methods, we don't need these GDP growth, inflation rate, or interest rate factor. We only need the year and sales. Okay, so linear regression, I hope we all can do, right? Simply you click on the data, uh, like 1 से लेके 10 तक, यहाँ ईयर 1 से लेके ईयर 10, एंड सिमिलरली आई मीन साइमल्टेनियसली आप सेल्स को भी सिलेक्ट करोगे, इंसर्ट इंसर्ट में जाओगे, एंड देन यू क्लिक स्कैटर प्लॉट, और ये स्कैटर प्लॉट बना के देगा। आप इस प्लस बटन में क्लिक करोगे, ट्रेंड लाइन को आप टिक करोगे, देन ट्रेंड लाइन में डबल क्लिक करके आप कोई सा भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो, which best fits these dots, right? So this thing I have done here, you can see it perfectly fits. तो ऐसा क्या लिया मैं, लेट्स सी। आई थिंक मैंने एक्सपोनेंशियल लिया था।
वेट अ सेक, थोड़ा सा आई थिंक गलत हो गया. व्हाट इज इट? आई मीन, अच्छा यहाँ पे 11 12 13 14 15 16 का भी है. बेसिक मेथड इज, आप पहले ईयर को सिलेक्ट करो, फिर सेल्स को सिलेक्ट करो. दिस y x axis and this is y axis. Year is our x, sales is our y. You click on insert, you go to this thing, तो ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन में जाके लीनियर सिलेक्ट करोगे, आप देखोगे कि ऐसा कुछ लाइन बन जाएगा. आप इसमें डबल क्लिक करके डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट करोगे, तो ये कुछ ऐसा इक्वेशन देगा कि y इक्वल्स टू 1171 x प्लस 2612.8, और आर स्क्वायर का वैल्यू भी देगा कि अपना यू नो ये जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है ये कितना वेरी कर रहा है लाइंस से, है ना, इनका स्क्वायर एरर इसको कहते हैं. तो हमें आर स्क्वायर की फिलहाल जरूरत नहीं है, हमें इस इक्वेशन की जरूरत है. y इक्वल्स टू 1171.1 x प्लस 2612.8, जो कि हमें बताता है कि गिवन x का वैल्यू नेक्स्ट y का वैल्यू क्या होगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल हमें हमारे पास 10th पॉइंट डेटा है, अगर हमें 11th पॉइंट का निकालना है तो we will put the value of x as 11. वन ये हो जाएगा y का वैल्यू 1171.1 इंटू 11 प्लस 2612.8. ओके, एज सिंपल एज दैट. और हमने यहाँ पे यही किया है, एज यू कैन सी, राइट. सो सिमिलरली फॉर 12th, for forecasting the 12th year, you just put in the place of x, you put 12 and it gives you the output. देन वी हैव 3 years मूविंग एवरेज, जिसको मैंने पाइथन के यूज पाइथन की मदद से किया है. बट दिस कैन ऑल्सो बी डन थ्रू एक्सेल. मैं आपका पाइथन का वाला वो दिखाता हूँ. See, हमने पहले अपना कुछ इंपॉर्टेंट नेसेसरी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया. फिर हमने एक सेल्स फोरकास्ट नाम का एक डेटा फ्रेम बनाया जिसमें हमने अपना डेटा डाला. फिर हम 3 year मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने के लिए ये कोड यूज किया कि रोलिंग विंडो इक्वल्स टू 3, है ना, डॉट मीन, क्योंकि ये 3 years का एवरेज होने वाला है. उसके बाद, नाउ दैट वी हैड आवर मॉडल, वी जस्ट यूज दैट टू प्रेडिक्ट द सेल्स फॉर द नेक्स्ट 5 years. ये हमने एक एक डिक्शनरी बनाया जिसमें हमने 3 3 साल का लूप चलाया. उसके बाद हमने आउटपुट निकाला, तो आउटपुट से हमें ये आउटपुट मिला, जिसको हमने डायरेक्टली एक्सेल में डाल दिया. कहा गया एक्सेल, जैसे यू कैन सी 13228147, 13228147. Okay, so this is our 3 year moving average result forecast. Then we have ARIMA. ARIMA is a effective time series technique, auto-regressive integrated moving average. तो ये basically moving average ही है. It is moving average only, but it takes into account some of the factors which moving average do not take. Like, now
ARIMA मीन्स ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज। थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन चैट जीपीटी में। व्हाट इज ARIMA, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम 3 year मूविंग एवरेज। हाँ, तो ARIMA में क्या डिफरेंट है कि वो स्टेशनरिटी लाता है डेटा में। ओके। तो अ, जैसे कि हम पढ़ सकते हैं कि ऑटो रिग्रेसिव का मतलब है कि जब करंट वैल्यू ऑफ द सीरीज इज बेस्ड ऑन इट्स प्रीवियस वैल्यूज, जो कि 3 year मूविंग एवरेज में भी है, बट इंटीग्रेटेड में वो स्टेशनरिटी फैक्टर लाता है, विच मीन्स कोई ट्रेंड हो गया या फिर सीजनैलिटी हो गया, इनको हटा देता है डेटा से। ओके। मूविंग एवरेज, as you can see that average continuously change होता रहता है as time goes on। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, बट डिफरेंस मोस्टली मतलब लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। मेन डिफरेंस बिटवीन मूविंग एवरेज एंड अरिमा यही है कि स्टेशनरिटी लाता है। हाउ? बाय रिमूविंग द ट्रेंड एंड सीजनैलिटी, है ना। देन वी हैव Arimax। नाउ व्हाट इज Arimax? अरे रुक जाओ। An extension of ARIMA is the inclusion of exogenous variables, right? So, what are these? GDP growth, inflation rate, interest rate, these are exogenous variables. What are exogenous variables? We can call it external factors, right? जो कि हमारे y वेरिएबल को अफेक्ट करता है। तो जीडीपी ग्रोथ हमने डायरेक्टली इंटरनेट से निकाल लिया, है ना। इन्फ्लेशन रेट भी हमने डायरेक्टली इंटरनेट से निकाल लिया। और सेम इज द केस फॉर इंटरेस्ट रेट। Year 1 is, I think, okay, so year 10 is 2024. So year 1 is 2004. No, 2014 या फिर 2015 whatever. So last 10 years का डेटा हमने निकाला for GDP growth, for inflation rate and as well as for interest rate, जिसको जिसको यूज करके हमने एडिमैक्स का फोरकास्ट किया यूजिंग पाइथन से। आरिमा का फोरकास्ट निकल गया, उसके बाद हम पहले हमने एक्सोजेनियस वेरिएबल्स को डिफाइन किया कि जीडीपी ग्रोथ लेना है, इन्फ्लेशन रेट लेना है और इंटरेस्ट रेट भी लेना है ना। उसके बाद एडिमैक्स मॉडल को हमने फिट किया कि फ्रॉम स्टैट मॉडल्स इंपोर्ट सरीमैक्स, देन एडिमैक्स मॉडल इक्वल्स टू सरीमैक्स sales forecast, sales exogenous variables order 111। Okay, so this is the code which I have extracted from chat gpt। I won't lie, okay, I am not a very professional coder। बस थोड़ा थोड़ा कोड आता है, इससे काम चला लेते हैं। यहाँ पे सर एक गलती हो गया मेरे से। ओके, कि यहाँ पे मैंने ये जो ग्रोथ रेट है ना, ये ग्रोथ रेट मैंने सिर्फ 10th ईयर तक निकाला।
जो कि मेरे को करना चाहिए था इसके बाद, कि मैं इन पे लीनियर रिग्रेशन लगा के इनका एटलीस्ट 5 इयर्स प्रेडिक्ट करता, तो मुझे एक एक्चुअल फोरकास्ट मिलता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैं 10th तक ही रोक दिया। तो चैट जीपीटी ने क्या किया, चैट जीपीटी ने एज्यूम कर लिया कि नेक्स्ट 5 साल के लिए हमारा ये जीडीपी ग्रोथ होने वाला है, इन्फ्लेशन रेट ये होने वाला है 5%। हाँ, ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, क्लोज है, ऑन एन एवरेज सही है। इंटरेस्ट रेट 6 के, हाँ सही है, ठीक है। सही है। बहुत रैंडम कुछ नहीं लिया है, इनका एवरेज ही लिया है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इसी रेंज में लिया है चैट जीपीटी ने। कम ऑन, एआई इज इंटेलिजेंट, राइट? प्रोबेबली मोर इंटेलिजेंट देन यू एंड मी। सो या, सो आरडीमैक्स का रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया यूजिंग दिस टेक्निक। द नेक्स्ट मॉडल आई मेक, आई विल टेक दिस इनटू अकाउंट कि मैं नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए भी ये चीजें कैलकुलेट करूंगा, ये 3 चीजें। तो हमने सेल्स फोरकास्ट किया, जैसा कि हम देख सकते हैं कि लीनियर की मदद से। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारे फोरकास्टेड वैल्यूज है। आईडी मैक्स का रिजल्ट हमें थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला है, और 3 ईयर मूविंग एवरेज हमारा सबसे कम है। Okay. तो ओवर एंड ऑल, फोरकास्टेड वैल्यूज पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बट आई वांटेड टू एम्फसाइज ऑन द मेथड that I used to forecast sales. अब before I go to the next calculation, next sheet, which is WACC calculation, weighted average cost of capital, let me explain why I have used these exogenous variables. Right? GDP growth मैंने क्यों लिया? जीडीपी ग्रोथ मैंने इसलिए लिया क्योंकि सेल्स के साथ जीडीपी ग्रोथ का एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। अगर जीडीपी ग्रो नहीं होगा, राइट? नाउ व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज द, आई वुड से, value addition, or you can say the sum of all the goods and services that has been brought or sold in a year, right? Now if GDP is less, it means that the people, the buyers are not buying, right? or selling. So अगर लोग मतलब खरीद नहीं रहे हैं, right? Customers are not buying, then my sales will be all obviously be impacted, right? So this is how GDP growth impacts sales. इन्फ्लेशन रेट कैसे इम्पैक्ट करता है? व्हाट इज इन्फ्लेशन रेट? इन्फ्लेशन रेट इज कि चीजों की महंगाई किस रेट से बढ़ रही है ना? द रेट एट विच द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग और products in general. Now if inflation rate is high, it will mean that the commodity prices in general are increasing, है ना? लेट्स से बहुत मतलब बहुत इंटरप्रिटेशन हो सकता है इसका। एक इंटरप्रिटेशन जो इन्फ्लेशन रेट सेल्स पे इम्पैक्ट डाल सकता है वो ये है कि कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ जाएगा। नाउ if a simultaneous for making up that increase in cost of raw materials, it has to increase the price of its final goods. Up final, given that India is a price sensitive market, उस price of final goods, as a result of increase in price in final goods, my sales will impacted, है ना? थोड़ा सा अगर प्राइस चीजों का दाम बढ़ जाता है तो लोग खरीदने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। ये अपना देश है। तो दिस इज हाउ इन्फ्लेशन रेट कैन इंक्रीज सेल्स। हाउ इज इंटरेस्ट रेट इम्पैक्टिंग सेल्स? अगर इंटरेस्ट रेट लेट्स से 8.5% है ना,
जनरली लोग ऑटोमोटिव व्हीकल्स लोन पर खरीदते हैं. ओके, और लेट्स से द लोन रेट इज 10%. अब अगर हमारा इंटरेस्ट रेट 8.5% है, नो, इंटरेस्ट रेट मीन्स risk free rate at which on an average government security gives you interest. Now if interest rate is 8.5%, okay, and let's say uh, the EMI or the loan interest rate is 10%, that means ये जो 1.5% का घाटा है ये कस्टमर को बेयर करना पड़ेगा. इट मीन्स ये 10% तो जा ही रहा है ना, पर से वो ये 1.5% का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. So keeping this in mind, if the risk-free rate is, more than the interest rate, so on debt, then customers find it, incentive. It is better for customers to keep their money in any risk-free collateral, any risk-free asset, any risk-free investment to fetch the return in the next couple of years. And जब risk-free rate कम हो जाएगा interest rate से, then it will make sense for them to you know invest on depreciating assets like automobiles. That being said, let's go on to the next sheet, which is WACC calculation. Now coming to the WACC section, it is why WACC calculation is important. WACC calculation is important to uh, arrive at the DCF valuation, right? As you can see, WACC is used for a lot of for calculating a lot of things here. Also, WACC is important for calculating the growth rate at which our cash flows will be growing each year, right? So over and above, WACC is an important thing for calculating DCF of a company. Now, the formula for WACC is cost of debt into weight of debt into tax shield plus weight of equity into cost of equity. Now, if the debt is, levered debt, then we can ignore the tax effect while calculating WACC. And here I have used levered debt. So yeah, the formula is weight of debt into cost of debt plus weight of equity into cost of equity. Now we will see how we calculated each of these components. First, let's see for the case in equity. Let's see how we calculated the cost of equity. Cost of equity we calculated. Now the formula we all know for cost of equity, which is CAPM model formula, which is RF plus market risk premium into beta, right? अब रिस्क फ्री रेट हमने कैसे कैलकुलेट किया? I think this figure we took directly from the internet, right? Average price of uh, average government security, और एक सेकंड. Yeah, so this figure I took directly from the internet. Risk free rate. Let's check what is the prevailing average risk free rate currently.
yield on 10-year government bonds, right? As of October 2023, the yield on these bonds is around 7.36%. So ठीक है, 6.88%, close to 7% we have taken, and here it says 7.36%. तो या कोई दिक्कत नहीं इसमें. RF is, as we saw, uh, average price of 10-year, so average yield to maturity of 10-year government bonds. Then we have market risk premium, which is RM minus RF. So यहाँ पे दो कंपोनेंट है, RM एंड RF. RM हमने कैसे कैलकुलेट किया देखते हैं. इसके लिए हमने एक सेपरेट शीट बनाया है हमने. नाउ RM is calculated by taking the average Nifty 50 closing price, है ना. This is these are the years 2000 to 2023, and these are average closing price for to this entire year. Okay. अब इसको हमने कहाँ से लिया. We can see that इसको हम NSE के वेबसाइट से इजीली हम हमें मिल सकता है. Can easily get this from NSE website. Let's see. Let's Google it. NSE closing, so Nifty 50 closing price yearly. अभी जैसे हमने, आई थिंक प्राइम इन्वेस्टर पे मिलेगा. मैं कहाँ से निकाला था ये डेटा, आई डोंट एक्चुअली रिमेम्बर. हाँ यही था. तो कहाँ से निकाला था हमने. तो एज यू कैन सी, हमने ये कहीं से तो डाउनलोड किया है हमने ये एक्सेल शीट, जहाँ पे 2000 से लेके 2023 तक अपना डेटा है, मंथली क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ निफ्टी 50 एंड द एनुअल, विच इज नथिंग बट द एवरेज. एवरेज ही है ना. एक से. नहीं, ये एवरेज नहीं है. फिर क्या है ये. लेट्स से दिस माइनस दिस बाय दिस. हाँ. तो दिस इज CAGR, राइट. ग्रोथ रेट की, आई मीन जनवरी से दिसंबर तक कितना हमारा ग्रोथ हुआ है ऑन एन एवरेज. तो कोई फॉर्मूला तो होगा यार. I don't remember the formula right now, but this is the CAGR in percentage terms for the entire year. कहाँ से लिया था ये. Right. Investors.
free tools, Nifty 50 return chart. हाँ, यही से लिया था मैं, प्राइम इन्वेस्टर्स से। जैसे the annual returns for 2000 is minus 14.65%। माइनस यार, हाँ माइनस ही है, सही है। तो प्राइम इन्वेस्टर से मैंने ये डेटा उठाया था। यहाँ पे नीचे अगर यू इफ यू क्लिक ऑन गेट द डेटा, दिस entire data will get downloaded in an Excel file which you can copy, right? So uh, I calculate the average of all these 23 years here. Then uh, dividend, I also factor in the dividend yield. Dividend yield also you will get from this website only, I think. Yes, see, dividend yield 1.16. After which you arrive at the RM, uh, which you factor in here for calculating the cost of equity. I have directly calculated RM minus RF. Okay, so RM was what? Some 16.77%, and RF was this. So 16.77 minus this is uh, RM minus RF. Levered beta. Now, how we have calculated levered beta? I23. Okay, so here is levered beta. Now, how we have calculated levered beta? For that, first we have taken competitors' median unlevered beta. Okay, we have made this chart. You can see here peer comps. Here we have taken Tata Motors, one, two, three, four, five competitor companies, their total debt, their total equity, their tax rate. I have taken an average tax rate of 30%. These are their debt to equity, these are their debt to capital. Levered beta you can obtain directly from the internet. For example, let me show for Tata Motors. Tata Motors, Tata Motors beta. Money Controls is the name of this website, and I think here they directly show the beta, which is 1.08. जब मैंने ये डेटा उठाया था तब ये 1.07 था, अभी ये 1.08 हो गया है। तो बीटा keeps changing. What is beta? Beta is a measure of how, in which direction the stock price moves as compared to the entire Nifty 50, right? Like market जब सीधा जाता है तब अपना स्टॉक किधर जाता है। अगर बीटा ऑफ 1.07 मीन्स कि मार्केट के साथ ही अपना स्टॉक मूव करता है, राइट? कि अगर मार्केट हैज सीन अ 10% इंक्रीज, देन टाटा मोटर स्टॉक विल यू नो see a one 10.07% increase. So this is how it works. No, 10.7% increase. Okay. Now this levered beta we have calculated into unlevered beta by this formula called levered beta by bracket open 1 plus bracket open 1 minus F3. What is F3? Tax rate. Both the brackets closed into G3. What is G3? Debt to equity ratio. Okay. All these things I have obtained from screener, like total debt, total equity, tax rate I have assumed 30%, debt to equity and debt to capital, all these things I have obtained directly from screener. If one or two metrics is not directly available, like I think in my case, debt to capital was not directly available, so I found it out from the other metrics, like अपने पास डेब्ट था, इक्विटी था, तो डेब्ट बाय कैपिटल इज बेसिकली डेब्ट प्लस इक्विटी मिला के ही तो वो होता है ना, अपना कैपिटल होता है।
तो डेट प्लस इक्विटी बिकम्स आवर डेट बाई कैपिटल। ओके, तो ऐसे कुछ करके हमने मे बी एक या दो अ, ऐसे मैट्रिक्स निकाले हैं। उसके बाद हमने एवरेज और मीडियन कैलकुलेट करा है, स्टार्टिंग फ्रॉम टैक्स रेट टू अनलिमिटेड बीटा। ओके, तो वहां से हमने कॉम्स मीडियन अनलिमिटेड बीटा निकाला। यू कैन सी अनलिमिटेड बीटा 102% और 102%। Then we have calculated target debt by equity ratio. How we have calculated target debt by equity ratio? See here, we have taken it a figure directly from here. For obtaining target debt to equity ratio, we have first found out the target debt and target market capital. Okay, so current debt to equity ratio, uh, we can get directly from the screener. Okay, current market cap also we can get directly from the screener. What is market cap? Market cap is basically debt by debt plus equity, है ना? This is actual figures. Total debt इतना है और market cap इतना है, और this is basically this debt as a percentage of market cap. Sorry, debt as a percentage of total capital. Now, market cap is equity, right? Equity value. There's a slight mistake in my narration. Debt और market cap मिला के होता है total capital. तो this is debt as a percentage of total capital. This is equity as a percentage of total capital. दोनों मिला के 1 होता है। टारगेट कहाँ से पता चला? टारगेट में पता चला मीडियन डेप्ट टू कैपिटल रेशियो ऑफ कॉम्पिटिटर्स, राइट? मीडियन डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, डेप्ट टू कैपिटल रेशियो ऑफ कॉम्पिटिटर्स बनता है हमारा टारगेट डेप्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल। सिमिलरली इसको 1 माइनस ये वाला करोगे तो आपको ये वाला निकल जाएगा। इसको हमने कहाँ पे यूज किया है? टारगेट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो में हमने ये वाला यूज किया है, राइट? ये है टारगेट डेप्ट, ये है टारगेट इक्विटी, डेप्ट बाई टारगेट डेप्ट बाई इक्विटी, दोनों को डिवाइड करने से आ गया। इसको हमने यहाँ पे यूज किया। टैक्स रेट हमने 30% डाला, जो कि हम स्टैंडर्ड कैलकुलेट करते आए हैं। उसके बाद हमने लेवर्ड लेवर्ड बीटा निकाला इस फॉर्मूले से, राइट? जैसे कि हम पहले लिवर्ड से अनलिवर्ड जा रहे थे, तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया कि लिवर्ड बाई 1 + 1 माइनस टैक्स रेट इंटू डेट टू इक्विटी। उसका उल्टा थोड़ा थोड़ा सा ऑल्टर करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा। पहले हम डिवाइड कर रहे थे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक अनलिवर्ड इंटू 1 + 1 माइनस टैक्स रेट इंटू टारगेट डेट टू इक्विटी। तो इससे हमारा लेवर्ड बीटा आ जाएगा, जिसको हम कहाँ पे पुट करेंगे? हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी में पुट करेंगे। उसके बाद हम CAPM का फॉर्मूला लगा के कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल जाएगा हमें। उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालेंगे। अब प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट हमने कहाँ से निकाला? हमने क्या किया? हमने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट K15/C42। K15 कहाँ पे है? K15 है हमारा ये। अब दिस कैन यू सी व्हाट इज दिस? दिस इज फाइनेंस कॉस्ट, और इन अदर वर्ड्स इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द कंपनी। ये इंटरेस्ट किस पे करता है? वो डेट पे करता है ना? वट एवर डेट इट हैज टेकन, ऑन दैट इट इज पेइंग इंटरेस्ट। अब डायरेक्टली हमें ये वाला चीज नहीं दिया रहता है, क्या कहते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ डेट। तो हम मैन्युअली कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि फाइनेंस कॉस्ट
बाई यहाँ पे, फिर हम बैलेंस शीट में आके डिनोमिनेटर के लिए हम बोरोइंग्स और लीज लाइबिलिटीज दोनों एक साथ नॉन करेंट लाइबिलिटीज को यूज करते हैं। या तो आप इन दोनों को यूज कर सकते हो, या फिर आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग को यूज कर सकते हो, है ना, बाई विच यू विल गेट फ्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। मैंने सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग यूज किया है। फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल मॉडल आई मेक, आई विल यूज बोथ द लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स फॉर डिनोमिनेटर। देन हमने टैक्स रेट 30% लिया था, तो उसको हमने दिस इंटू वन माइनस टैक्स रेट कर दिया, हमें पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट मिल गया। तो हमारे पास अभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट है। वेट कैसे हमने जनरेट किया? ओके, वेट हमने डायरेक्टली टारगेटेड वेट ले लिया। जो हमारा टारगेट डेब्ट है और हमारा टारगेट इक्विटी है, ये हमने डायरेक्टली यहाँ से हार्ड कोड कर लिया। आफ्टर विच वी use the formula to arrive at WACC figure. Now let's go to the common size statement. So this is a rough, you know, format for common size statement. I have not calculated the common size statement. Let me explain why you can, I mean, what is the use of common size statement. Common size statement में क्या होता है कि हम we calculate each of the components of P&L and balance sheet as a percentage of its major head. Like यहाँ पे let's say हम सेल्स को 100% लेते हैं, सेम इज द केस फॉर दिस, एंड हम फिर अदर इनकम को एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से 10% ऑफ सेल्स इज आवर अदर इनकम, then the total income becomes 100 and sales 10%. Now let's assume that COGS is, let's say, 30%, 50% of sales. Okay, तो ऐसे करते करते हम EAT फिगर पे आएंगे which will tell us what percent of sales is our EAT, right? तो ये कंपेयर करने के लिए काफी काम आता है, राइट? दिस इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग कंपनीज अक्रॉस इंडस्ट्री। कि लेट्स से ईचर मोटर्स का ईएटी मार्जिन, आई मीन नेट प्रॉफिट मार्जिन इतना है, और लेट्स से टाटा मोटर्स का इतना है, तो वी कैन कंपेयर। क्योंकि एब्सोल्यूट फिगर्स कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि the scale of operations of Tata Motors and Eicher is very, you know, how do you put it? Very different. Tata Motors has a diverse range of products as compared to Eicher Motors. But if we are looking at it from the investor's perspective, so let's say I have put 2000 rupees for purchasing Tata Motors share and 100 rupees for purchasing Eicher Motors share. Now we will see returns, right? As an investor, we will see things from the returns perspective. Let's say this is giving 15% return. Sorry, okay, 1% return, and this is giving, let's say, 2% return. Now, in 1 year, my 2000 rupees will become uh, into 1.1, ये हो गया 110%, हमें पता है ना, 101%, तो ये हो जाएगा 1.01, तो ये हो गया 2020, और ये हो जाएगा हमारा 102। नाउ इससे हमें इफेक्टिवली 20 रुपए का रिटर्न मिला है, इससे हमें 2 रुपए का रिटर्न मिला है। बट इफ यू कैलकुलेट कितना हमने इन्वेस्ट किया था, तो हमें पता चला कि मतलब
परसेंटेज टर्म्स में हमें each year में ज्यादा वो मिला है, रिटर्न मिला है. So this is why we should always see things from the investor's standpoint and not from the company's standpoint. And I have not uh, filled the common size statement, but you can do it using this format. Then we come to the growth rate. Our growth rate is that rate which we will use to, uh, you know, forecast the FCFF figures. Okay, in the next sheet. So how we have calculated DCF? Sorry, how we have calculated growth rate? First, we have put uh, the current asset from 2020 to 2024. Then we have put current liability. Then we have put non-current asset. Then depreciation. All these figures I have directly referenced from the historical financial statement sheet. Okay. Then we have obtained net working capital, which is CA minus CL, right? Current asset minus current liability. Then we have net non-current asset, which is NCA, non-current asset minus depreciation gives us net non-current asset. This we have calculated for these 1, 2, 3, 4, 5 years. Then we have calculated invested capital. What is invested capital? Which is net working capital plus net non-current asset gives us invested capital. EBIT we have directly obtained from the reformulated P&L that we made earlier, right? And then we have calculated return on invested capital, which is EBIT by invested capital. This is our EBIT, this is our invested capital. We will divide this by this, and then you obtain this percentage. Now we will calculate reinvestment rate. What is reinvestment rate? From the net profit, a portion of the net profit is saved for capital investments, capex purposes, for putting it back to business. So this is the reinvestment rate. After subtracting the reinvestment rate, the rest of the, what do you say, funds are available to the equity shareholders for distribution as dividend, right? So for calculating reinvestment rate, we first calculate net capex. How do you calculate net capex? Let's see. S57, S58. S57. This is cash flow from investing activities. यहाँ से हमने पीपी मतलब पीपी का मतलब कैपेक्स इन्वेस्टमेंट उठाया हमने, जितना भी कैपेक्स इन्वेस्टमेंट, एक तो ये है कैपेक्स, एक तो ये है कैपेक्स इन्वेस्टमेंट, और दूसरा ये है, दिस इज द कैश दैट आई हैव यूज्ड फॉर परचेसिंग पीपीई, एंड दिस इज द कैश दैट आई हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेलिंग पीपीई डिस्पोजल, राइट? इन दोनों को मिला के हमारा हो जाता है नेट कैपेक्स. देन चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल, जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है, लाइक 2020 का तो हम खैर कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट 2021 में 2020 से कितना चेंज आया, दैट वी कैन कैलकुलेट हियर. देन वी हैव EBIT. What is EBIT? EBIT we have directly referenced from here, or you can reference from reformulated P&L as well. Then we have calculated marginal tax rate. Uh, not we have not calculated. We have assumed marginal tax rate. Then we have used the formula EBIT into 1 minus tax rate to arrive at this figure. Now we calculate reinvestment. What is reinvestment?
This is basically net capex plus change in net working capital gives us reinvestment. We have calculated this over across all these years. Then we have calculated reinvestment rate, which is reinvestment by EBIT into 1 minus tax rate. Then calculation of growth rate. What is now for reinvestment rate? We have also calculated the average here. We might use it somewhere down the line. Then we have calculation of growth rate. Reinvestment rate हमने directly यहाँ से वो कर लिया equals to मार लिया है ना. And ROIC also we have directly referenced from here. तो intrinsic growth rate हमारा हो जाता है reinvestment rate into ROIC, return on capital employed. और इसका भी हमने average calculate कर रखा है, which we might use later. Now let's come to the DCF. Now, DCF stands for discounted cash flow. It is one of the methods of valuation where we discount the uh, cash flows, I mean FCFFs, free cash flow to the firm till the terminal growth rate, terminal year, and discount them at an appropriate rate, which is WACC, to arrive at its present value, which is then we use the Gordon's growth formula to calculate the further things. So I will go to in them in some time. तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो टू द फर्म. हमने पहले ईबिट पुट किया, उसके बाद टैक्स पुट किया, हमने फिर ईबिट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट किया, फिर यहाँ से रीइन्वेस्टमेंट जो हमने पिछले शीट में कैलकुलेट किया था उसको सब्ट्रैक्ट किया, जिससे हमारा FCFF निकल गया. तो FCFF का फॉर्मूला क्या बनता है? दिस ईबिट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस रीइन्वेस्टमेंट. जैसा कि मैंने बताया था कि कंपनी जो ईबिट जनरेट करती है ना, earning before interest and tax. Okay, wait a second. There is some clarification needed here. Now, what is EBIT? EBIT is that portion which is available to the earning before interest and tax. इंटरेस्ट भी यहाँ से डिडक्ट होगा, टैक्स भी यहाँ से डिडक्ट होगा, है ना. इंटरेस्ट किसको जाता है? डेट होल्डर्स को जाता है. टैक्स किसको जाता है? सरकार को जाता है. तो इस पैसे पे सरकार का भी क्लेम है, डेप्ट होल्डर्स का भी क्लेम है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी क्लेम है. तो यहाँ से हम अगर री इन्वेस्टमेंट रेट को हटा दें तो हमारे पास बचता है फ्री कैश free cash flow to the firm. Up, uh, Sometimes back I said that free cash flow to the firm is available for all equity holders, which is wrong because uh, free cash flow to the firm as uh, yeah, इस पैसे पे डेट होल्डर्स का भी क्लेम है ना. I'm talking about able to 1 minus tax rate. सरकार ने अपना हक जता लिया. उसके बाद री इन्वेस्टमेंट रेट, बिजनेस ने कुछ पैसा यहाँ से हटा लिया अपने बिजनेस पे वापस डालने के लिए, जिसके बाद हमारे पास FCFF आता है. अब FCFF पे दो लोगों का क्लेम है, एक तो इक्विटी होल्डर्स, दूसरा डेब्ट होल्डर्स. अब अ, है ना, या दोनों का क्लेम आता है. अब एक और ऐसा सिमिलर मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है विच इज FCFE. तो यहाँ से अगर FCFF से आप डेब्ट कंपोनेंट हटा दोगे लाइक इंटरेस्ट, तो वो हो जाता है FCFE, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी होल्डर्स. ये पैसा इक्विटी होल्डर्स में बांट दिया जाता है as in form of dividend or maybe stock dividend. Okay, so this is how it works. Anyway, we have calculated FCFF for our DCF calculation purpose. Then we have calculated mid-year convention, which is basically forecasted year में ये 0.5 होता है 22, then +1 करते जाओ इनको, तो अपना mid-year convention जो है ये 4.5 तक पहुंचा.
Then we have discounting factor, um, uh, which is कैसे हमें calculate किया discounting factor 1 by 1 plus mid-year convention to the power C70. Okay, 1 by 1 plus WAC to the power mid-year convention is our discounting factor. Now, don't ask me the logic behind it because I don't know. My mentor has taught me this formula and I have used it widely. Mm, so, yeah, after obtaining the discounting factor, we calculate present value of XCF, where we multiply this by discounting factor and we arrive at this. We do it for all the forecasting years. Then we calculate. Here are some of the interest. Here are some of the rates like expected growth rate. This is my calculated expected growth rate, which I've obtained after doing all these calculations. And you can also obtain the expected growth rate for the industry directly from the internet, which I obtained as 9%. Then we have terminal growth rate, which is 5.64%. This is basically nothing but long-term GDP growth rate. You can directly obtain it from the uh, internet. Or what I have done is uh, I have used average growth rate of GDP for the last couple of years, 10 years, which I had used for calculating forecasting here. ये जो 5.64% मैंने obtain किया GDP growth rate last 10 years का वो मैंने यहाँ पे यूज किया. Then we have weighted average cost of capital, which I have directly put from this WACC sheet. Then we have calculated the terminal value. We have calculated terminal value where we have first put FCFF into n plus 1. How we have arrived at this figure, FCFF. लास्ट ईयर का जो EBIT into 1 minus tax return, उसके साथ हमने 1 plus expected growth rate को मल्टीप्लाई करा. Then we have calculated back, I mean back is directly here. टर्मिनल ग्रोथ रेट को भी हमने डायरेक्टली यही सपोर्ट किया. तो टर्मिनल वैल्यू हमारा आता है, कैसे हमने कैलकुलेट किया, 321 by this minus this. This is directly Gordon's growth formula, right? तो टर्मिनल वैल्यू पे थोड़ी जानकारी ले लेते हैं चैट जीपीटी से. ओके, सो टर्मिनल वैल्यू होता है लाइक किसी भी बिजनेस का एक ग्रोथ पीरियड होता है, देन एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, देन डिक्लाइन होता है. अपन क्या करते हैं कि okay, हाँ, वो अपन क्या करते हैं कि एक टाइम फ्रेम निकालते हैं जहां से डिक्लाइन फेज स्टार्ट होता है और फिर उसको अपना टर्मिनल ग्रोथ रेट टर्मिनल ईयर मान लेते हैं, फिर वहीं तक हम फोरकास्ट करते हैं कि अपने टर्मिनल ईयर तक अपन कितना ग्रो करेंगे. बट ऐसा नहीं है कि उसके बाद हम लेना छोड़ देंगे, है ना. हम उसके बाद भी लेंगे बट मोस्टली उसके बाद इट विल इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट. सो टर्मिनल ईयर तक कैलकुलेट करना इज द कन्वेंशन. तो टर्मिनल वैल्यू को हमने गॉर्डन ग्रोथ रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया है कि लास्ट ईयर का जो 2028 का हमारा EBIT into 1 minus tax return is divided by WACC minus terminal growth rate.
जो हमें टर्मिनल वैल्यू देता है। Value of a company or project at the end of explicit forecast period, beyond which future cash flows are more uncertain, है ना। और टर्मिनल वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने, फोरकास्ट का जो लास्ट पीरियड था 2028, यहाँ पे हम ईबिट इंटू वन माइनस टैक्स रेट के वाला जो फिगर था, ओके, यही था। सॉरी, हाँ, यही था। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने इसके साथ वैग जोड़ दिया, सॉरी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जोड़ दिया। हाँ, तो हमने एज्यूम किया कि इस रेट से ये बढ़ने वाला है 7.4% से। तो हमने एफ सी एफ एफ इंटू एन प्लस वन का के लिए टर्मिनल जुगाड़ कर लिया। उसके बाद हमने इस पे गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला लगाया तो अराइव एट टर्मिनल वैल्यू। अब क्या करेंगे, हम इक्विटी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वी ऑब्टेन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफ सी एफ एफ, which is what, which is sum of all the present values for the forecasted years। और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू, ये जो टर्मिनल वैल्यू हमने निकाला इसका भी प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि ये तो वो लाइक terminal value is that is the sum of cash flows that the company is supposed to generate starting from the terminal year to till the infinite future। इसको हम डिस्काउंट कैसे करेंगे, कौन से रेट से डिस्काउंट करेंगे, हम लास्ट का ईयर का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है उससे हम डिस्काउंट करेंगे। वो हमारा निकल के आएगा इंटरप्राइज वैल्यू। व्हाट इज एंटरप्राइज वैल्यू? इट इज द सम ऑफ पीवी ऑफ एचसीएफ इन द फोरकास्टिंग ईयर्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू। कंपनी का जो ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज दैट कंपनी इज सपोज टू जनरेट इन द फ्यूचर, उसका प्रेजेंट वैल्यू इज एंटरप्राइज वैल्यू। इसके साथ हम कैश को ऐड करेंगे, प्रेजेंट ईयर का कैश और प्रेजेंट ईयर के डेब्ट को माइनस करेंगे, तो हम अपना वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल आएगा, राइट। ये वैल्यू ऑफ इक्विटी इज व्हाट इज सपोज टू बी द बुक वैल्यू ऑफ इन द ऑफ द कंपनी। अब यहाँ से हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का क्या है। uh, ये है, नाउ व्हाट इज दिस फिगर, बट दिस इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर, राइट। तो हमें पता चलता है कि अगर हमारा कैलकुलेट किया हुआ वैल्यू ये है, राइट, और कंपनी के अकॉर्डिंग आई मीन मार्केट के अकॉर्डिंग ये है कंपनी का करेक्ट वैल्यूएशन, तो इक्विटी इज ओवर वैल्यू, आई मीन द कंपनी इज ओवर वैल्यू बाय हाउ मच, current market capital minus the value of equity that we found out, and we can also calculate how much overvalued is each of the shares of the company. For the current EPS we have obtained from screener 152.8. Then we also have the number of shares which I have calculated using this formula। Current market cap हमारे पास था into 1 crore. So all these figures are in crores, right? Into 1 crore by C39 by current EPS. Okay. So in this formula, using this formula, I have calculated the number of shares. Then we have calculated EPS according to our valuation. So number of how we have calculated this? The value of equity according to ours into 1 crore by number of shares, which is in crores. तो मार्केट के अकॉर्डिंग एक शेयर का अर्निंग प्राइस है लाइक 152.8, और
हमारे अकॉर्डिंग इट इज 22.37. तो स्टॉक इज ओवरवैल्यूड बाय current EPS divided by EPS according to our valuation, which is 6.83 times. Now this 6.83 times, keep in mind because we are going to cross check it, right? कि हमारा calculation कितना accurate हुआ है. So for this purpose, we go to screen at Eicher Motors. Now see, if you go to the pros and cons, okay, अभी अभी नहीं दिखा रहा है बट जब मैं ये DCF वैल्यूएशन कंप्लीट किया था तब in the cons section there was another bullet point stating that the company is trading at 7 times its book value और हमारे अकॉर्डिंग वो आया था कितना 6.83 टाइम्स तो इट वाज क्वाइट क्लोज ओके बट एनीवे this completes our DCF valuation. Then we go to the relative valuation. So relative valuation is yet another interesting concept where we value our company relative to the competitor companies. There are there are three methods of relative valuation. First is enterprise value by revenue, then we have EV by EBITDA, and then we have price by earnings. Okay, so you can see how I have calculated this. First, I have taken data for around 8 competitors, sorry 7 competitors because each motor भी यहाँ पे है. तो हमने ये डिटेल्स निकाले हैं. शेयर प्राइस निकाला है हमने, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स निकाले हैं, इक्विटी वैल्यू निकाला है, नेट डेप्ट इन करोड़ निकाला है, इंटरप्राइज वैल्यू निकाला है, सेल्स रेवेन्यू निकाला है, लास्ट ईयर का एबिटा निकाला है, नेट इनकम निकाला है. अगर इनमें से कुछ आपको नहीं भी मिलता है स्क्रीनर में, कुछ रेशियोज की मदद से आप कुछ कुछ फिगर्स यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना. तो देन ईवी बाय रेवेन्यू वी डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम ईवी. यहाँ पे है रेवेन्यू हमारा, यहाँ पे है तो डिवाइड कर दिया हमने, तो ईवी बाय रेवेन्यू निकल गया हमारा. सिमिलरली ईवी यहाँ पे है, EBITDA यहाँ पे है तो दोनों को डिवाइड कर दिया, ये निकल गया. प्राइस टू अर्निंग्स भी यहाँ पे लाइक प्राइस पर शेयर, शेयर प्राइस बाय अर्निंग पर शेयर. ओके नहीं, प्राइस पर अर्निंग, प्राइस टू अर्निंग इक्विटी वैल्यू बाय अर्निंग नेट इनकम. इक्विटी वैल्यू बाय नेट इनकम. तो ये जो फिगर्स हमारा निकल निकल के आता है ये वैल्यूएशन सेक्शन में, ये टाइम्स में निकल के आता है. Like EV is 3 times the revenue. Enterprise value is 3 times the revenue of the company of TVS, right? ऐसे हम कुछ मेट्रिक्स निकालते हैं, फिर हम एक नो एनालिसिस वाला 1 2 3 4 5 6 हम हाई निकालते हैं इनका, लाइक इनका मैक्स निकालते हैं. ये जो वैल्यूएशन वाले मेट्रिक्स है इनका मैक्स निकालते हैं, 75 परसेंटाइल निकालते हैं, एवरेज मीडियम एंड लो. ये सब निकाल के हम फिर वैल्यूएशन करते हैं. पहले हम इम्प्लाइड एंटरप्राइज वैल्यू निकालते हैं जो कि है रेवेन्यू इनटू मीडियन ईवी बाय रेवेन्यू, है ना. रेवेन्यू इनटू मीडियन ईवी बाय रेवेन्यू से हमारा निकल के आता है एंटरप्राइज वैल्यू, क्योंकि रेवेन्यू और रेवेन्यू तो कट जाएगा और हमारा बचेगा एंटरप्राइज वैल्यू. और यहाँ पे भी हम सेम काम करते हैं, बस इंस्टेड ऑफ टेकिंग यू नो रेवेन्यू वी टेक EBITDA.
क्योंकि हमें अल्टीमेटली ईवी पे आना है। बाकी जैसे ईवी पे आना है और हमें रेवेन्यू को कैंसिल आउट करना है ना। या फिर हमें ये इन दिस केस में या फिर कैंसिल आउट EBITDA, तो EBITDA को ही लेंगे हम। ये हम ईचर मोटर्स के रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। ईचर मोटर्स का रेवेन्यू, ईचर मोटर्स का EBITDA, उसके साथ हम इंडस्ट्री के मीडियन लाइक कॉम्पिटिटर्स के मीडियन रेशियो के साथ उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू अराइव एट इम्प्लाइड एंटरप्राइज। जितना हो सकता है, जितना होना चाहिए, राइट, जितना होना चाहिए एक्चुअली उसके कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग। सिमिलरली हम प्राइस टू अर्निंग कैसे निकालते हैं? ओके, इसको हम बैक कैलकुलेट करते हैं, तो फिलहाल के लिए इसको छोड़ देंगे। इसके बाद हम 273.13 विच इज बेसिकली नेट नेट डेप्ट ऑफ फीचर मोटर्स, जिसको हमने निकाल रखा था यहाँ पे, ये रहा। इसको हमने यहाँ पे डायरेक्टली हार्ड कोड कर दिया। इम्प्लाइड इम्प्लाइड मार्केट वैल्यू क्या है ये? इम्प्लाइड मार्केट वैल्यू क्या होना चाहिए? इम्प्लाइड एंटरप्राइज वैल्यू माइनस नेट डेप्ट होता है हमारा मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो एंटरप्राइज वैल्यू माइनस डेप्ट हो जाता है हमारा मार्केट वैल्यू। उसके बाद हमने शेयर्स आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट किया, कितने शेयर्स हमारे मार्केट में आउटस्टैंडिंग है, ये भी हमने डायरेक्टली हार्ड हार्ड कोड कर दिया। तो हमारा निकल के आ गया इम्प्लाइड वैल्यू पर शेयर, विच इज नथिंग बट इम्प्लाइड EV बाई शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब जब हमने इन दोनों का निकाल लिया है ना, तो इसको हमने कैसे निकाला? लाइक इम्प्लाइड मार्केट वैल्यू ऑफ फॉर PE हमने कैसे निकाला? वी डिवाइडेड द this is I think median, yes, median PE with K4. What is K4? Net income. Net income into PE becomes our implied market value. अब इसके साथ हमने ये जोड़ दिया नेट डेप्थ, तो हमारा इम्प्लाइड यहाँ EV आ गया, राइट। तो दिस इम्प्लाइड वैल्यू पर शेयर, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर हमने फिर डायरेक्ट स्क्रीनर से इनपुट किया कि ये है। उसके बाद हमें पता चला कि it is selling at a premium. In each of these methods, it is selling at a premium. The first case, it is selling at a premium of 2000 something. Then for the next method, it is selling at a premium of 418 and then at 316. Right? Premium मतलब ये अपना स्टॉक जो है ये currently ओवर वैल्यूड है, right? As compared to our valuation. Now, investment banks do the same valuation things to find out whether the market is, whether the share is currently uh, बीइंग सेल्फ सोल्ड एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट। उसके बेसिस पे वो लोग रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि whether they should buy, hold or sell these shares. For example, if I was a investment banker, I would suggest that since these shares are being sold at a premium, इससे क्या होता है कि मार्केट वैल्यू ज्यादा है इसके एक्चुअल प्राइस से, तो it is supposed to come down as market corrects itself, right? So in future we can forecast that it is supposed to come down, right? हाँ, हो सकता है कि इससे आगे ना बढ़े अपने शेयर का प्राइस, तो इस पॉइंट पे हमारा सेल करना सही रहेगा, है ना, क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम प्राइस एट विच इट कैन राइज। इससे इसके बाद ये गिरना ही है, और अगर ये गिरा तो मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू भी गिरेगा। इससे बेटर है कि मैं अभी इनको बेचता हूँ,
है ना, उनको बेच के कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक खरीद लेता हूँ. So yeah, this completes our uh, my valuation for Eicher Motors. These are some of the data that I directly uh, copy pasted from Screener for relative valuation purpose. So yeah, with that, I stop this recording. If you have viewed till now, then thanks a lot for viewing. In the next week, I will come with another company's DCF valuation method. Till then, goodbye.